इमरान खान बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनकी हुकूमत के दौरान किए गए बेशुमार फैसलों पर तनकीद तो की जा सकती है, लेकिन इमरान खान की शख्सियत के एक पहलू जिस पर अपोजिशन रहनुमा भी तनकीद नहीं कर सकते वो है आलमी सतह पर हर फोरम पर इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना। मगरबी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत को इस्लामी दुनिया के बेशतर हुक्मरानों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन इमरान खान ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान मुजाहिदाना आवाज़ भरपूर अंदाज में बुलंद की। इमरान खान की इन काविशों की 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के हुक्मरान और अवाम समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक भी मोतरफ़ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की इमरान खान की एक तारीख़ी तकरीर से जो उन्होंने सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इजलास के दौरान की, जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते हुए कहा कि There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. इसी तकरीर में मजीद इमरान खान ने तौहीन रिसालत के हवाले से बात करते हुए कहा, It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. इसी तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 दुबई के फोरम से खिताब करते हुए इमरान खान ने रियासत मदीना का जिक्र करते हुए क्या कहा, देखिए। Was on the Prophet, or Prophet peace be upon him, the state of Medina which he created. Now, why do I say the state of Medina? Because the state of Medina laid the foundation of one of the greatest civilizations in the history of mankind. The principles that found the foundation of the state of Medina is what for the next 700 years was the greatest civilization on earth. अल जज़ीरा पर एक इंटरव्यू के दौरान खातून सहाफ़ी ने जनाब इमरान खान से सवाल किया कि एक मुसलमान रहनुमा के तौर पर मगरिब को इस्लाम के हकीकी तसव्वुर से रोशनास कराने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि The problem with Muslim leaders is that they have never actually tried to explain Islam in its true essence to the Western countries. And therefore, when Islam gets maligned, there's propaganda against Islam, there is not a proper intellectual response from the Muslim leadership. So therefore, we have this phenomenon of Islamophobia, especially after, for instance, 9/11. There was no response from the Muslim leadership because terrorism has no relation to Islam. In fact, terrorism has no relation to any religion. When you say Islamic terrorism, it brands all Muslims. People can't tell the difference. How can an ordinary person in the West, how can he tell the difference between a radical Muslim and a moderate Muslim? So these terminologies actually cause Islamophobia, and unfortunately the Muslim leadership never explained it to the Western countries or the United Nations or to the European Union. As a result, Muslims in the Western countries have suffered from Islamophobia.
इसी तरह एक अमेरिकन इस्लामिक स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि in an extraordinary country with extraordinary people is restore that pride and sense of who we are as a people. The Quran liberates a human being when God says that there are three things that are in His hands. Number one is respect and humiliation. So you cannot be humiliated and you cannot respect unless God wills it. Number two is how much risk, in other words, how much you will, the sort of money you will have in life, how much you will make in life, that is also in God's hand. You can only strive, but He is the one who will determine how wealthy you will become. And third is life and death. That's in God's hands. So in my opinion, these three areas are which give us greatest concern. We are scared of dying, we are scared of being humiliated or being deprived of a livelihood. So in my opinion, when you have faith, you have complete belief that the things that cause you the greatest fear are in God's hands. बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस्लाम से मुताल्लिक़ इमरान खान की काविशों की बात की जाए तो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाने के लिए चाहे इमरान खान का मुसलमान हुक्मरान को ख़त हो या फिर होलोकास्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी पाबंदी लगाने के लिए फेसबुक के बानी को ख़त। एक मुस्लिम लीडर होने के नाते वो अपने इन फ़राइज़ से कभी पीछे नहीं हटे।